नया टॉपिक डायमेंशनल एनालिसिस। तो आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि डायमेंशंस क्या होता है। किसी भी मैथमेटिकल स्पेस में किसी पॉइंट को स्पेसिफाई करने के लिए कम से कम इतने कोऑर्डिनेट्स की जरूरत होती है, हम उनको डायमेंशंस कहते हैं। जैसे किसी लाइन पे आपने किसी पॉइंट को स्पेसिफाई करना है तो आपको सिर्फ एक कोऑर्डिनेट की जरूरत होगी। उसी तरह अगर आपने प्लेन में किसी पॉइंट को स्पेसिफाई करना है तो आपको दो कोऑर्डिनेट्स की जरूरत होगी, एक्स और वाई। अगर आपने किसी 3D स्ट्रक्चर और 3D स्पेस में किसी पॉइंट को स्पेसिफाई करना है तो आपको 3 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत होगी। तो ऐसे ही फिजिकल वर्ल्ड में फिजिकल यूनिट्स के लिए डायमेंशनल एनालिसिस क्या है, आज वही बात करेंगे। तो व्हाट इज डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी? हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें हमारे पास दो क्वांटिटीज हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटीज की यूनिट्स को हम डिराइव्ड यूनिट्स बोलेंगे और फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट्स को हम डिराइव्ड यूनिट्स को फिर हम फंडामेंटल यूनिट्स के पावर्स के फॉर्म में डायमेंशनल फार्मूला बोलेंगे। सो द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी are powers to which the base quantities are raised to represent that quantity. It means if the mass is fundamental quantity, length is also a fundamental quantity, time is also a fundamental quantity. So m की powers l जब भी हमारी fundamental quantities है उनकी powers के फॉर्म में अगर हम अपनी derived units को represent कर सकते हैं डायमेंशनल फार्मूला बोलते हैं। लाइक हमारे पास वॉल्यूम, आप एक क्यूब देख रहे हैं जिसमें वॉल्यूम की 3 डायमेंशंस हैं, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। इन तीनों को हम लेंथ के 3 डायमेंशंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो द डायमेंशनल फार्मूला फॉर वॉल्यूम विल बी क्यूब। नाउ डायमेंशनल फार्मूले एंड इक्वेशंस। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस की डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? हम इसको लेंथ के 1 डायमेंशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को टाइम के 1 डायमेंशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। सो द वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय m0 lt -1, जिसका मतलब क्या है? जैसे दो चीजें निकाल सकते हैं, जैसे कि वेलोसिटी की जो यूनिट है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, और जो वेलोसिटी की यूनिट में लेंथ की जो पावर है, लेंथ का जो डायमेंशन है वो 1 है, टाइम का जो डायमेंशन है वो -1 है। इसका मतलब जो ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड, एंड वेलोसिटी इज इक्वल्स टू m0 lt -1. इट इज द डायमेंशनल इक्वेशन। फॉर दिस वी हैव अ जनरल इक्वेशन, x इज इक्वल्स टू ma lb tc। इसका मतलब क्या है कि मास की डायमेंशन a है, लेंथ की डायमेंशन b है, टाइम की डायमेंशन c है। So the general equation is x is equals to m raised a, l raised b, t raised c. So how to find time? Density is equals to mass upon volume. So the SI unit of density is kg per meter cube. इसका मीनिंग क्या है? मास का डायमेंशन जो है 1 है एंड लेंथ का डायमेंशन 3 है। इसका मतलब है l - 3। ऐसे इलेक्ट्रिक चार्ज जो है करंट इनटू टाइम होता है कि करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और टाइम भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी। करंट की ऐसा यूनिट है एम्पियर और टाइम की सेकंड। तो इसको हम एम्पियर और टाइम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। इसकी डायमेंशन करंट की एम्पियर होगी और टाइम की t इन 1 डायमेंशन। डायमेंशनल फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज इज m0 l0 ta। इसका मतलब क्या है कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ m and l, but it depends only on T and A. Next is specific heat. Specific heat is equals to quantity of heat divided by mass into temperature. It means specific heat जो है वो depend करती है quantity of heat और mass। Specific heat होती क्या है? Specific heat, it is the amount of heat energy required to raise the temperature of 1 kg of substance by 1 degree. And the SI unit of specific heat is kg inverse Kelvin inverse. And the dimensional formula is mL2 T - 2 divided by mK, which means now the dimensional formula for specific heat is m cancels m is equals to m0 L2 T - 2 Kelvin inverse, which gives the dimensions m0 L2 T - 2 K - 1. Now a few dimensional formula. Area is equals to length into breadth, which gives L into L is equals to L square. For velocity upon time,
is length divided by time. It means LT minus 1. Acceleration is equals to velocity divided by time. Velocity is equals to LT minus 1 divided by dimensional formula for time, which gives m0 LT minus 2 means acceleration. Dimension of the acceleration is independent of mass but depends on length and time. And dimension of length is 1 and dimension of time is minus 2. Linear momentum. Linear momentum is equals to mass into velocity, and the dimensional formula for mass is m and for velocity is LT minus 1. So the dimensional formula for linear momentum will be mlt minus 1. Force is equals to mass into acceleration. Dimensional formula for mass is m and for acceleration LT minus 2, which gives the dimension for m is 1 and for length is 1 and for time is minus 2. And pressure is equals to force upon area. Force is equals to ml t minus 2 divided by the dimensional formula for area is equals to ml minus 1 t minus 2. Work is equals to force into displacement, which gives ml t minus 2 into L, which gives the dimensional formula for work is equals to ml2 t minus 2. And electric current, which is the fundamental unit, so which gives the dimensional formula for electric current is m0 L0A. It means it only depends on the ampere. The unit is only ampere. Electric potential, work divided by charge. ml2 t minus 2 divided by AT, charge is equals to ampere into time, gives ml2 t minus 3 ampere inverse. Dimension of mass is 1, for length is 2, for time it is minus 3, for ampere it is minus 1. Next one is the conversion of units. फिजिकल क्वांटिटीज को हम लिख सकते हैं मेजर्ड वैल्यू और उसकी यूनिट के फॉर्म में, और हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि उसकी यूनिट को हम फंडामेंटल यूनिट्स के डायमेंशन के फॉर्म में लिख सकते हैं. तो Q is equals to NU, where N is the numerical value and U is the unit. So conversion from N1 U1 to N2 U2. इसका मतलब है अगर हमें एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में यूनिट को चेंज करना हो तो हम कैसे करेंगे? Here is the formula. N1 U1 is equals to N2 U2, and U1 can be written as M1A, L1B and T1C, and is equals to N2 M2A, L2B, T2C. So N2 is equals to N1 M1 divided by M2 whole A into L1 divided by L2 whole B into T1 divided by T2 whole C. Now example. For example, if you want to change 1 km per hour to n meter per second, so we will use the formula N1 U1 is equals to N2 U2, where N1 is 1 and U1 is km per hour, N2 is n and U2 is meter per second. N is equals to km per hour divided by meter per second. N1 is 1, so N is equals to 1 kilometer per hour. 1 kilometer is equals to 1000 meters. 1 hour is equals to 3600 seconds. So we will get N is equals to 5 by 18. Now applications of dimensional formula. हम dimensional formula को use कर सकते हैं physical quantities के बीच में relations निकालने के लिए और equation की consistency निकालने के लिए. और फिजिकल क्वांटिटीज का एडिशन और सब्ट्रैक्शन तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उनके डायमेंशन सेम ना हो. फॉर एग्जांपल 1 kg कैन नॉट बी एडेड टू 1 मीटर. नाउ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. एवरी टर्म ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन शुड हैव सेम डायमेंशन, इफ नॉट द इक्वेशन इज रॉन्ग. इसका मतलब ये है कि अगर f ma है तो लेफ्ट साइड में मास का जो डायमेंशन होगा वही राइट साइड में भी मास का डायमेंशन होगा. एंड for another example, let's check an equation. Half mv square is equals to mgh. जहाँ पे half जो है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो और m का डायमेंशन होगा m और v के लिए lt minus 1, और राइट साइड में m की डायमेंशन m होगी, g के लिए lt minus 2, and g is the acceleration due to gravity, h is equals to l. So we get
In LHS, ml2 t minus 2, and in RHS, we get ml2 t minus 2. It means the dimension in the left side is equals to in the right side. M is equals to 1, L is equals to 2, and T is equals to minus 2. It means the equation is dimensionally correct. Now, let's derive an expression for centripetal force if F depends on mvr using the dimensional formula. F is equals to k m raised to the power a, v raised to the power b, r raised to the power c from the question where a, b, c are the dimensions of mass, velocity and radius. In LHS, the dimensional formula for force is equals to ml t minus 2, and in RHS we have k a raised to the m raised to the power a, v raised to the power b and r raised to the power c. From here we get the value of A, B, C. By comparing LHS and RHS, we get A is equals to 1, B is equals to 2, C is equals to minus 1. Then substitute the values for A, B, C, get F is equals to K mv square upon R. Now drawbacks. जैसे heat और energy. अगर दोनों के बीच का dimension formula same है, लेकिन दोनों physical quantities अलग अलग है, तो हम दोनों के बीच में differentiate नहीं कर सकते इस dimensional formula को use करके. और ये सिर्फ डायमेंशन की वैलिडिटी को टेस्ट करता है और एग्जैक्ट रिलेशन कभी नहीं बताता. जैसे F इज इक्वल टू के एम वी स्क्वायर अपॉन आर, इसने सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में बताया, उसकी डायमेंशन के बारे में बताया, लेकिन इसने के की वैल्यू के बारे में नहीं बताया, वो है हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन आर.